Bismillahirrahmanirrahim. Corporate finance students, uh, this is our third lecture related to the topic of corporate valuation, value-based management, and corporate governance. In first two lectures, we covered corporate valuation model and value-based management. This third lecture will be about the corporate governance. So let's discuss what are the important aspects that should be kept in mind while deciding the corporate governance of our modern day businesses. Shareholders want companies to hire managers who are able and willing to take legal and ethical actions to maximize intrinsic stock prices. So one of the objective that is uh, one of the objective for the or one of the target for the managers is to maximize the intrinsic value of the stock prices, and that is the purpose for which they are hired. And basically there is agency contract here that shareholders who are the principal, who are the owners of the business, they hire the managers to act in a way that to take the steps which can maximize the intrinsic stock prices. This obviously requires managers with technical competence, but it also requires managers who are willing to put forth the extra effort necessary to identify and implement value adding activities. Okay, so here the importance of the competence of the managers can be it can be seen that why we need competent managers as well as we need those managers who can put extra effort to bring the increase in the value of the stock price. However, managers are people and people have both personal and corporate goals. So logically, therefore, managers can be expected to act in their own self-interests, and if their self-interests are not aligned with those of stockholders, then corporate value will not be maximized. ठीक है जी, तो this is the concept of the agency conflict. ठीक है कि जी, why there is an agency conflict? Because the managers who are hired to act in the best interest of the shareholders, they have their own personal interest, and their personal interest might collide with the interest of the shareholders. Now, what are the different ways where we see that the manager's behavior might harm a firm's intrinsic value? So basically, there are 6 ways. Let's discuss those 6 ways in which the manager's actions might not be in line with the interest of the shareholders. Number 1, managers might not expend the time and effort required to maximize firm value. Rather than focusing on corporate tasks, they might spend too much time on external activities such as serving on board of other companies or on non-productive activities such as golfing, lunching, and traveling. Right. So here we can see that the personal interest of the managers, they are not in line with the corporate goals. Right, rather than spending time for achieving the corporate goal, which is the maximization of the shareholders' wealth, they are spending their time on other non-productive activities, or they might be spending their time on while they are serving as uh, serving on the board of other companies. Managers might use corporate resources on activities that benefit themselves rather than shareholders. For example, they might spend company money on such perquisites as lavish offices, memberships at country clubs, museum quality art for corporate apartments, large personal staff, and corporate jets. Because these perks are not actually cash payments to the managers, they are called non-pecuniary benefits. ठीक है, तो यहाँ पे we can see the definition of non-pecuniary benefits. Non-pecuniary benefits are non-cash benefits which are enjoyed by the managers, and they can include that examples that we saw here, that they can be uh, spending money to have lavish offices, then spending money to get the membership at country clubs,
spending money for museum quality art for corporate apartments, again something which is non-productive, and keeping large personal staff and corporate jets that we see in certain companies. So here what is happening, that the managers are using corporate resources on activities that benefit themselves rather than shareholders. So here we saw that these are the two different ways in which the actions of the managers, they are not serving the purpose of the shareholders. Number one, the managers are spending too much time on non-productive activities, and number two, the managers are using the corporate resources on activities that benefit themselves rather than shareholders. And also we saw the definition of non-pecuniary benefits. Non-pecuniary benefits are benefits enjoyed by the managers, but they are not in the form of cash. And the third way in which managers' actions can deviate from the corporate objectives is that managers might avoid making difficult but value enhancing decisions that harm friends in the company. For example, a manager might not close a plant or terminate a project if the manager has personal relationship with those who are adversely affected by such decisions, even if termination is the economically sound action. Right? So here we saw an example. Okay, something that is in the interest of the company, the managers are not taking that decision. Why? Because that decision is affecting someone who is close to them. So here we saw the problem that managers they might avoid making difficult but value enhancing decisions because those decisions are harming their friends in the company. Okay, now let's see what is the fourth action taken by the managers. Managers might take on too much risk, or they might not take on enough risk. For example, a company might have the opportunity to undertake a risky project with a positive NPV. If the project turns out badly, then the manager's reputation will be harmed and the manager might even be fired. Thus, a manager might choose to avoid risky projects even if they are desirable from a shareholder's point of view. So, a project which is beneficial, which has a positive NPV, but it has a lot of risk involved in it. So, the managers might avoid and making investment in that project. Why? Because that might adversely affect the managers, the interest of the managers. So here the managers are avoiding to take some risk. On the other hand, a manager might take on projects with too much risk. Consider a project that is not living up to expectations. A manager might be tempted to invest even more money in the project rather than admit that the project is a failure. Or a manager might be willing to take a second project with a negative NPV if it has even a slight chance of a very positive outcome, since hitting a home run with this second project might cover up the first project's poor performance. In other words, the manager might throw good money after bad. ठीक है, तो ये दो एग्जांपल्स हमने यहाँ देखी. एक एग्जांपल के अंदर जो है वो मैनेजर अवॉइड कर रहा है रिस्क, क्योंकि वो रिस्क लेने से इट माइट the reputation of the manager might suffer. और दूसरे एग्जांपल के अंदर हम ये देख रहे हैं कि मैनेजर एक रिस्की प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्ट कर रहा है और रीज़न उसकी ये है कि जी दैट प्रोजेक्ट appeal to the manager, or the manager might have some vested interest in that project. अब वो प्रोजेक्ट जब फेल हो रहा है तो इंस्टेड के उसमें से पैसा निकाल लिया जाए, द मैनेजर इज विलिंग टू स्पेंड पुट इन मोर मनी कि शायद हम पिछला पैसा भी रिकवर कर लें, या एक नेगेटिव प्रोजेक्ट के फेलियर के बाद वो मैनेजर जो है दूसरा चांस लेना चाह रहे हैं, दूसरे प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं कि शायद उससे हमें जो प्रॉफिट आएगा तो उससे हम पहले वाले जो हमारा लॉस हुआ उसको भी हम रिकवर कर सकते हैं. सो हियर दीज टू एग्जांपल्स गिव अस एन आइडिया कि जी इन वन केस द मैनेजर्स आर not ready to take enough risk,
that might be in the interest of the shareholders, and in the second case the managers are taking too much risk which is adversely affecting the interest of the shareholders. Number 5, if a company is generating positive free cash flows, a manager might stockpile it in the form of marketable securities instead of returning free cash flows to investors. So remember, free cash flow is something which is over and above the requirement of the business, and that cash is why it is known as free cash flow, because it can be spent in any purpose the company or the manager desire to spend. अच्छा, अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि जी फ्री कैश फ्लोज आ रहे हैं, लेकिन जो मैनेजर्स हैं वो उसको स्पेंड करने के बजाय दे आर इन्वेस्टिंग इन मार्केटेबल सिक्योरिटीज, और दे आर नॉट रिटर्निंग देम टू द इन्वेस्टर, यानी डिविडेंड की फॉर्म में देने के बजाय वो उसको दे आर कीपिंग अ स्टॉक पाइल in the form of marketable securities. This potentially harms investors because it prevents them from allocating these funds to other companies with good growth opportunities. अब एक तो इसका नुकसान ये हो गया कि आपने जो फ्री कैश फ्लो थे उनको मार्केटेबल सिक्योरिटीज में डाल दिया, बजाय इसके कि आप उसको कुछ और प्रोजेक्ट्स के अंदर इन्वेस्ट करते जहां से आपका बिजनेस जो है फर्दर ग्रो हो सकता था. Even worse, positive free cash flows often tempts a manager into paying too much for the acquisition of another company. In fact, most mergers and acquisitions end up as break-even deals at best for the acquiring company because the premiums paid for the targets are often very large. ठीक है, तो फ्री कैश फ्लोज का एक यूजेज ये भी है कि आप इसको मर्जर्स के लिए, एक्विजिशंस के लिए यूज कर सकते हैं, लेकिन जो यहाँ पे हम उसका ट्रैक रिकॉर्ड देखते हैं मर्जर्स और एक्विजिशंस का, तो आमतौर से जो आप कंपनी एक्वायर करते हैं उसके लिए आपको जो यू हैव टू पे द प्रीमियम मनी. ठीक है, वाई यू आर गोइंग फॉर एक्विजिशन और मर्जर ऑफ अ कंपनी, क्योंकि आपको लगता है कि वो कंपनी दैट विल ऐड वैल्यू टू योर बिजनेस, तो यू आर बेसिकली इंक्लाइंड. ठीक है, आप उसके लिए जैसे कहते हैं बेताब हैं कि वो आप कंपनी एक्वायर कर सकें, तो उसके लिए आप यू आर रेडी टू पे एनी अमाउंट ऑफ मनी. तो नॉर्मली होता ही है कि आप उसमें ज़्यादा पे कर जाते हैं और उस मर्जर और एक्विजिशन से फिर आप वो डिज़ायर्ड रिटर्न नहीं हासिल कर सकते, क्योंकि आपने ऑलरेडी उसके ऊपर बहुत ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट कर दिया होता है. तो ये यहाँ पे हमें ये नज़र आ रहा है कि जी फ्री कैश फ्लोज जो हैं उनको जब आप प्रॉपरली इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, उनको प्रॉपरली यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो दैट एक्शन इज एडवर्सली अफेक्टिंग द इंटरेस्ट ऑफ द स्टॉक होल्डर्स. Okay, so why would a manager be reluctant to return cash to investors? क्यों मैनेजर नहीं चाहेगा कैश देना इन्वेस्टर्स को या डिविडेंड पे करना? फर्स्ट, एक्स्ट्रा कैश ऑन हैंड रिड्यूसेस द कंपनीज रिस्क विच अपील्स टू मैनी मैनेजर्स. तो जैसे हम कहते हैं ना कि जी बुरे वक्त के लिए अपने पास कुछ आप पैसा रखना चाहते हैं, तो ये चीज़ है जो कि टेम्प्ट करती है मैनेजर्स को टू कीप एक्स्ट्रा कैश ऑन हैंड. Second, a large distribution of cash to investor is an admission that the company doesn't have enough good investment opportunities. Slow growth is normal for a maturing company, but it isn't very exciting for a manager to admit this. ठीक है ना, तो अगर आप यानी रीजन वाई यू आर नॉट विलिंग टू पे कैश टू द इन्वेस्टर्स, कि उससे एक सिग्नल ये जाएगा कि जी कंपनी इतना ज़्यादा डिविडेंड पे करी, इसका मतलब है कि इनके पास कोई ज़्यादा यानी ऑप्शंस नहीं है फॉर इन्वेस्टमेंट, इनके पास कोई इतने ज़्यादा प्रोजेक्ट्स नहीं है जो कि जिनमें ये इन्वेस्ट कर सकें. सो दैट सिग्नल, टू अवॉइड दैट नेगेटिव सिग्नल अबाउट द मैनेजमेंट, द मैनेजर्स आर रिलक्टेंट टू रिटर्न कैश टू द इन्वेस्टर्स. Third, there is a lot of glamour associated with making a large acquisition, and this can provide a large boost to a manager's ego. ठीक है ना, तो वो जो हमने मर्जर एक्विजिशंस की बात की है, तो ये जब आप कोई कंपनी एक वेल नोन ब्रांड को एक्वायर करती है तो उससे मैनेजर्स की जो है ना वो भी वाह वाह हो जाती है, मैनेजर्स का भी जो है ना वो इमेज बेहतर हो जाता है. तो दैट इज द रीजन दे आर मोर टेम्प्टेड टुवर्ड्स एक्विजिशन रादर देन पेइंग कैश टू द इन्वेस्टर्स.
And fourth, compensation usually is higher for executives at larger companies. Cash distribution to investors make a company smaller, not larger. तो ये भी एक रीज़न है कि जी जब आप कैश पे आउट कर रहे हैं तो देन यू हैव लेस कैश अवेलेबल, और जब आपके पास लेस कैश अवेलेबल होगा तो obviously you will not be able to pay too much to the executives. अच्छा, ये एक एग्जेक्टिव compensation का जो है that is one of the issue that is growing concern in the corporate world कि जी uh, many people, many experts, they believe that executives are paid irrationally, यानी उनको बहुत ज़्यादा high amount पे की जाती है, और that is not proportionate to what they are contributing to the company. या in other words, कुछ लोग ये कहते हैं कि जी देखें, कंपनी के अंदर तो कंट्रीब्यूट सारे ही लोग कर रहे हैं, लेकिन उसका जो मेजर बेनिफिट है वो तो उसका जो मेन बेनिफिट एंजॉय कर रहे हैं वो टॉप लेवल मैनेजर्स एंजॉय करें, बाकी एम्प्लॉयज को उस तरह से उसका शेयर नहीं मिलता. सो दीज आर द फोर रीजंस कि जिसकी वजह से द मैनेजर्स आर रिलक्टेंट टू रिटर्न कैश टू इन्वेस्टर्स. Okay, now sixth way, sixth point is managers might not release all the information that is desired by investors. Sometimes they might withhold information to prevent competitors from gaining an advantage. At other times, they might try to avoid releasing bad news. For example, they might massage the data or manage the earnings so that the news doesn't look so bad. If investors are unsure about the quality of information provided by managers, they tend to discount the company's expected free cash flows at a higher cost of capital, which reduces the company's intrinsic value. अच्छा, अब यहाँ पे जी एक और इशू है which is related to the action of the managers which is not serving the interest of the shareholders, वो है hiding of the information कि जी why the information is kept secret कि one is that to prevent competitors from gaining an advantage कि जी वो information अगर competitors के पास चली जाएगी तो that might be advantage for them, or at other times they might try to avoid releasing bad news. कोई बुरी खबर है तो कंपनीज उसको कवर करने की कोशिश करती हैं, ठीक है, और ये जो मसाज द डाटा और मैनेज द अर्निंग्स हैं, तो ये भी एक आपको कॉमन प्रैक्टिस नज़र आती है इन द कॉर्पोरेट वर्ल्ड, सो दैट द न्यूज़ डजंट लुक सो बैड. अगर आपको एनरॉन का केस याद हो तो एनरॉन के अंदर भी सेम दिस थिंग वाज हैपनिंग कि जी कंपनी वाज नॉट फाइनेंशियली दैट मच स्ट्रॉन्ग, और वो अपने एक्सपेंडिचर्स को दे वर शोइंग देम एज इन्वेस्टमेंट्स, तो हाउ दैट इज हाउ दे वर कवरिंग देयर लॉसेस. ठीक है, तो अब इस तरह की जो सिचुएशन है that is not something which serve the interest of the shareholders के जी managers are hiding the information that actually should be shared with the shareholders. Now these are the 6 actions that we saw, that where the managers are doing something which is not in line with the objectives of the corporate, which is basically to maximize the shareholders' wealth. If senior managers believe there is a little chance that they will be removed, we say that they are entrenched. Such a company faces a high risk of being poorly run because entrenched managers are able to act in their own interest rather than in the interest of the shareholders. अच्छा, ये entrenched management का concept ये कि अगर managers को ये एहसास हो जाए कि they are indispensable, यानी उनको निकाला नहीं जा सकता, ठीक है, तो जब उनको ये कॉन्फिडेंस आ जाता है कि उनको तो निकाला नहीं जा सकता, तो एट दिस दैट इज द पॉइंट वेयर दे स्टार्ट एक्टिंग इन देयर ओन इंटरेस्ट रादर देन एक्टिंग इन द इंटरेस्ट ऑफ द शेयर होल्डर्स. तो ये इंट्रेंच्ड मैनेजमेंट जो है ना, दैट इज नॉट इन द इंटरेस्ट ऑफ द शेयर होल्डर्स के जी कुछ मैनेजर्स हैं वो कंपनी के लिए लाजिम और मलजूम समझ ली जाते हैं कि जी इनके बगैर तो कंपनी चल नहीं सकती. तो जब ये एहसास हो जाता है, इस तरह की कोई जो है वो सेंटिमेंट्स आ जाते हैं, या इस तरह की कोई लोगों के जहन में इस तरह का कोई
ख्याल आ जाता है तो उससे फिर जो है दैट इज नॉट गुड फॉर द कंपनी। Okay, so here this concept of entrenched management that we just discussed in the previous slide, वो यहाँ पे डिस्कस किया गया कि what is entrenched concept of entrenched management या entrenched managers कि those people or those managers who think they are indispensable for the business. Oh, so based on this discussion, we saw that what we can conclude based on this all discussion, KG, there need to be some mechanism which can make the managers to work in the best interest of the shareholders. ठीक है, तो इसके लिए कुछ ना कुछ आपको ऐसा मैकेनिज्म डिवाइड, इसी को कॉर्पोरेट गवर्नेंस कहते हैं. A key requirement for successful implementation of value-based management is to influence executives and other managers so that they do not behave in the ways described in the previous section, but instead behave in a way that maximize a firm's intrinsic value. Corporate governance can provide just such an influence. ठीक है, तो यानी ये जो corporate governance है that is part of your value based management कि जिसके अंदर आप इंश्योर करना चाहते हैं कि जी all your managers they are working in the best interest of the shareholders or best interest of the company. Corporate governance can be defined as the set of laws, rules, and procedures that influence a company's operations and decisions by its managers. ठीक है, तो आपको कॉर्पोरेट गवर्नेंस के अंदर यू आर डिफाइनिंग डिफरेंट लॉज, कुछ ऐसे लॉज या रूल्स या प्रोसीजर्स आप लेकर आना चाह रहे हैं जिनसे आप ये इंश्योर कर सकें कि जी कंपनी के जो मैनेजर्स हैं दे आर एक्टिंग इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी. Okay, at the risk of oversimplification, most corporate governance provisions come in two forms, stick and carrot. The primary stick is the threat of removal, either as a decision by the board of directors or as a result of a hostile takeover. If a firm's managers are maximizing the value of the resources entrusted to them, they need not fear the loss of their jobs. On the other hand, if managers are not maximizing value, they should be removed by their own board of directors, by dissident stockholders, or by other companies seeking to profit by installing a better management team. ठीक है, तो स्टिक एंड कैरेट अप्रोच है कॉर्पोरेट गवर्नेंस के अंदर. स्टिक ये है कि जी बेसिकली हाउ यू आर गोइंग टू पेनलाइज, तो पेनल्टी ये है फॉर द मैनेजर्स हु आर नॉट परफॉर्मिंग इन द इंटरेस्ट ऑफ द शेयर होल्डर्स कि उनको रिमूव किया जा सकता है, या और वो रिमूवल या तो कंपनी के अपने उसमें यानी कंपनी के अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के जरिए से उनको रिमूव किया जा सकता है, या फिर दैट होल टीम ऑफ मैनेजमेंट कैन बी रिमूव्ड बाय हॉस्टाइल टेक ओवर बाय अनदर टीम ऑफ मैनेजमेंट. ठीक है, तो ये स्टिक जो अप्रोच है दैट इज बेसिकली द थ्रेट ऑफ रिमूवल. नाउ टॉकिंग अबाउट द कैरेट, the main carrot is compensation. Managers have greater incentives to maximize intrinsic stock value if their compensation is linked to their firm's performance rather than being strictly in the form of salary. अच्छा, अब जो अगर आप देखें मॉडर्न कॉन्सेप्ट यही है कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस के अंदर के जितने भी टॉप लेवल मैनेजर्स हैं उनकी जो भी कॉम्पनसेशन है उसको लिंक कर दिया जाता है विद द कंपनीज परफॉर्मेंस. The better the company is performing, the higher compensation will those executives will be getting. So basically a win-win situation is created. ठीक है, तो this is the carrot approach कि जिसमें आप उनको compensate करते हैं managers को appropriately if they are working in the best possible manner. अच्छा जी, अब starting with the board of directors के जी how this
how to monitor the activities of the board of directors and how to discipline the board of directors. What can be done here? Studies showed that corporate governance usually improves if the CEO is not also the chairman of the board. ठीक है, ये जो है ना रिसर्च ये इंडिकेट करती है कि अगर सीईओ और चेयरमैन ऑफ द बोर्ड एक ही बंदा है तो वो कंपनी के लिए इतना सुटेबल नहीं है कंपेयर टू इफ दे आर टू डिफरेंट पीपल. ठीक है ना, तो ये एक दिस शुड बी समथिंग दैट कैन बी इम्प्लीमेंटेड बाय द कंपनीज के दे इंश्योर के दी सीईओ ऑफ द कंपनी एंड द चेयरमैन ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स दे आर टू डिफरेंट पीपल. अभी हम इसको आगे डिस्कस भी कर लेते हैं कि जी व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट. The board has a majority of true outsiders who bring some type of business expertise to the board and are not too busy with other activities. ठीक है जी. तो एक और जो प्रिंसिपल है अबाउट द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स वो ये कि जी इसके अंदर मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर्स ऑफ द बोर्ड शुड बी आउटसाइडर्स. ठीक है, इसको भी आगे हम डिस्कस करेंगे कि व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट. थर्ड, द बोर्ड इज नॉट टू लार्ज. जैसे हम कहते हैं कि जी काबीना जो होनी चाहिए वो बहुत ज़्यादा बड़ी काबीना नहीं होनी चाहिए. कैबिनेट जो है ना जिसमें आपके मिनिस्टर्स हैं उनकी तादाद कम होनी चाहिए. जितने ज़्यादा होंगे उतने आपके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगे. तो जितना आपका बोर्ड का साइज बड़ा होगा उतना ही वो काउंटर प्रोडक्टिव होगा. फोर्थ, बोर्ड मेंबर्स आर कॉम्पनसेटेड अप्रोप्रिएटली, not too high and not all cash, but including exposure to equity risk through options or stock. ठीक है, तो उनकी कॉम्पनसेशन को जैसे हमने पहले वो कैरेट वाली अप्रोच की बात की, तो अगर आप उसको लिंक कर दें कॉम्पनसेशन ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर विद द परफॉर्मेंस ऑफ द कंपनी, सो दैट विल बी बेटर फॉर दैट विल serve the in the that will serve in the interest of the company. Let's discuss these 4 points one by one ki why we are saying or why it is suggested these points regarding board of directors are suggested. So talking about the CEO should not also the chairman of the board. At many companies, the CEO is also the chairman of the board and has considerable influence on this nominating committee. This means that in practice, it often is the CEO who in effect nominates candidate for the board. High compensation and prestige go with a position on the board of a major company. So board seats are prized possessions. Board members typically want to retain their positions and they are grateful to whomever helped get them on the board. Thus, the nominating process often results in a board that is favorably disposed to the CEO. ठीक है, तो ये अब आपको उसकी रीजन समझ में आ गई कि भाई व्हाई इट इज सजेस्टेड दैट सीईओ शुड नॉट बी द चेयरमैन ऑफ द बोर्ड. कि जो आपका बोर्ड के ऊपर जो पोजीशंस हैं, जो आपका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, उसकी नॉमिनेशंस है दैट कम्स फ्रॉम द सीईओ. तो अगर सीईओ उनको नॉमिनेट कर रहा है तो ऑब्वियसली देन दोज पीपल विल बी ऑब्लाइज्ड, तो वो फिर दे विल नॉट गो अगेंस्ट सीईओ. ठीक है ना, वो सीईओ को सपोर्ट, यानी यू स्क्रैच माय बैक आई स्क्रैच योर बैक. तो ये यहाँ पे वो वाली सिचुएशन आ जाएगी कि जी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के जो मेंबर्स हैं वो सीईओ को oblige कर रहे हैं और सीईओ जो है उनको oblige कर रहा है. तो अल्टीमेटली हु इज सफरिंग इन दिस सिचुएशन? the shareholders or the principal of the real owner of the business, they are suffering in this situation. So that is why it is recommended that the CEO should not be the chairman of the board. Okay, the second point we discussed was that the board has a majority of outsiders. Many board members are insiders, that is people who hold managerial position within the company such as the CFO, Chief Financial Officer. ठीक है, तो अगर Chief Financial Officer आपका board का भी member है तो he is an insider. Because insiders report to the CEO, it may be difficult for them to oppose the CEO at a board meeting. ठीक है, तो अगर CFO है तो CFO तो CEO के अंडर काम कर रहा है, तो जब वो मीटिंग होगी तो he will not be able to oppose. ठीक है, वहाँ पे
ठीक है, वो सबॉर्डिनेट है तो वो किस तरह से अपने बॉस के खिलाफ कोई भी जो है ना बात कर सकता है इन द बोर्ड मीटिंग. To help mitigate this problem, several exchanges such as New York Stock Exchange and Nasdaq now require that listed companies have a majority of outside directors. तो इसलिए ये जो पॉइंट है कि जी why the board has a majority of outsiders के ताकि वो लोग हों जो कि खुल के कंपनी की पॉलिसी के ऊपर बात कर सकें और जो बोर्ड ऑफ जो मेंबर हैं उस बोर्ड के दे आर नॉट सबॉर्डिनेट टू द सीईओ. तो इसलिए इसको जो है बेसिकली रेकमेंड किया जाता है कि बोर्ड हैज अ मेजॉरिटी ऑफ आउटसाइडर्स. Some outside board members often have strong connection with the CEO through professional relationships, personal friendships, and consulting or other fee generating activities. In fact, outsiders sometimes have very little expert business knowledge but have celebrity status from non business activities. Some companies also have interlocking board of directors where company A's CEO sit on company's B board and B's CEO sit on A's board. In these situations, even the outside directors are not truly independent and impartial. ठीक है ना, तो इसका मतलब है कि interlocking board of directors is also not something which is uh, you know डिजायरेबल. ये भी डिजायरेबल सिचुएशन नहीं है कि ये इंटरलॉकिंग बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हो कि आपकी कंपनी का सीईओ दूसरी कंपनी में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मेंबर ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है और दूसरी कंपनी का जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का मेंबर है वो आपकी कंपनी का सीईओ है. तो उसमें ये हो जाएगा कि फिर वही बात है कि आप एक दूसरे को अपोज नहीं कर सकते और यू कैन नॉट बेसिकली आप एक कॉम्प्रोमाइज डिसीजंस ले रहे होंगे इस सिचुएशन के अंदर. सो दिस इंटरलॉकिंग बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इज समथिंग व्हिच इज नॉट डिजायरेबल फॉर द कंपनीज. Okay, so why it is recommended that board size is not too large. Large boards, those with more than about 10 members, often are less effective than smaller boards. Again, this is something which is proven by research. As anyone who has been on a committee can attest, individual participation tends to fall as committee size increases. Thus, there is a greater likelihood that members of a large board will be less active than those on smaller boards. ठीक है ना, जितने ज़्यादा लोग होंगे तो उसमें there will be many sleeping you can say members जो कि कोई काम भी who are not contributing anything to the business but still they are enjoying all the perks and benefits. तो इसलिए जो जितना बोर्ड साइज बड़ा होगा उतना ही वो काउंटर प्रोडक्टिव होता जाएगा. And the fourth one is that the member of the boards are compensated appropriately. The compensation of board members has an impact on the board's effectiveness. When board members have exceptionally high compensation, the CEO also tends to have exceptionally high compensation. This suggests that such boards tend to be too lenient with the CEO. अच्छा, अब ठीक है, इसमें compensation तो proper होनी चाहिए लेकिन इसमें ये भी एक इशू है कि अगर बोर्ड मेंबर्स जो हैं उनको आप एक्सेप्शनली हाई पे कर रहे हैं तो फिर सीईओ जो है उसको भी आपको अकॉर्डिंगली यू हैव टू पे हिम एक्सेप्शनली हाई कॉम्पनसेशन. तो इस सिचुएशन में फिर ये कि द बोर्ड टेंड्स टू बी टू लीनियंट विद द सीईओ. The form of board compensation also affects board performance. Rather than compensating board members with only salary, many companies now include restricted stock grants or stock options in an effort to better align board members with stockholders. ठीक है ना, वो जैसे हम कहते हैं स्टॉक ऑप्शन प्लान दे देते हैं आप उनको. बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के जो मेंबर्स हैं उनको भी आप शेयर्स एलोकेट कर देते हैं. तो इन दैट वे देयर इंटरेस्ट बिकम अलाइन विद द इंटरेस्ट ऑफ द शेयर होल्डर्स. ठीक है, जब आप उस कंपनी में आपकी इन्वेस्टमेंट भी है तो फिर आपके डिसीजंस भी डेफिनेटली ये होंगे कि हम मैक्सिमाइज कर सकें अपनी वेल्थ को. तो सिंस द ऑब्जेक्टिव ऑफ द शेयर होल्डर्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आर अलाइंड, दैट क्रिएट्स अ विन विन सिचुएशन.
अच्छा जी, एक और कॉर्पोरेट गवर्नेंस के अंदर जो प्रिंसिपल है वो ये है कि जी द कंपनी शुड promote stockholder-friendly charter. A stockholder-friendly charter has at least the following three characteristics. Number one, it should ban targeted share repurchases, which is also known as Greenmail. Number two, it does not contain a shareholder right provision, better described as a poison pill. And number three, it should contain restricted voting rights provision. So what is green mail, what is poison pill, and what is meant by restricted voting rights, that we are going to discuss in the upcoming slides. So starting with the green mail. Green mail is the practice of buying enough shares in a company to threaten a hostile takeover so that the target company will instead repurchase its shares at a premium. Regarding mergers and acquisitions, the green mail payment is made as a defensive measure to stop the takeover bid. The target company is forced to repurchase the stock at a substantial premium to thwart the takeover, which results in a lucrative profit to the green mailer. ग्रीन मेल का कॉन्सेप्ट ये है कि जी एक जो है वो आपके पास पार्टी है, एक इंडिविजुअल है, उसने सब्सटेंशियल नंबर ऑफ शेयर्स एक्वायर कर लिए हैं। अब वो आपके साथ बार्गेन ये कर लेता है कि जी मैं आप टेक ओवर में कंपनी टेक ओवर के लिए आई विल नॉट गो फॉर दैट, but you have to purchase shares from me at a certain price. Excuse me. So the target company is forced to repurchase the stock at a substantial premium to thwart the takeover. ठीक है ना, बेसिकली वो ब्लैकमेल से, जिस तरह हम ब्लैकमेल करते हैं किसी को, वहां से ये कॉन्सेप्ट ग्रीन मेल का निकला है कि वो ग्रीन मेलर क्या कर रहा है, वो आपको बेसिकली इंश्योर ये कर रहा है कि जी वो टेक ओवर नहीं होने देगा, लेकिन देन ऑन द अदर हैंड ही इज चार्जिंग प्रीमियम प्राइस फॉर द शेयर्स. So, as I mentioned, like blackmail, greenmail is money paid to an entity to stop or prevent aggressive behavior. In mergers and acquisition, it is an anti-takeover measure in which the target company pays a premium known as greenmail to purchase its own stock shares back at inflated prices from a corporate raider. After accepting the greenmail payment, the raider generally agrees to discontinue the takeover and not purchase any more shares for a specific time. ठीक है, तो उसने जो ग्रीन मिरर था उसने आपको यानी टेक ओवर नहीं किया, लेकिन उसने आपसे ये बार्गेन ये कर लिया कि जी आप उससे इन्फ्लेटेड प्राइस पे शेयर परचेज कर लें, वो टेक ओवर नहीं करेगा, वो ही विल नॉट सपोर्ट और ही विल नॉट गो फॉर द टेक ओवर ऑफ द मैनेजमेंट. और दूसरी चीज़ ये हो गई कि उसके साथ आपने यानी निगोशिएट ये कर लिया कि ही इज़ नॉट गोइंग टू परचेज फर्दर शेयर्स फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम. The term greenmail stems from a combination of blackmail and greenbacks, the dollars. The great number of corporate mergers that occurred during the 1980s led to a wave of greenmailing. During that time, it was suspected that some corporate traders seeking only to profit initiated takeover bids with no intention of following through on the takeover. ठीक है, तो एक वेव थी takeovers की that happened in 1980s. उसके अंदर फिर ये ग्रीन मेलर्स जो हैं दे अपीयर्ड कि जिन्होंने ये इस तरह के एक सिनेरियो क्रिएट कर दिया कि जी जैसे टेक ओवर होने लगा कंपनी का, और उस टेक ओवर को प्रिवेंट करने के लिए द कंपनी हैज़ टू निगोशिएट विद द ग्रीन मेलर ने उसमें से फ़ायदा उठाया अपना और उसको बेसिकली कंपनी को टेक ओवर से बचाया, लेकिन एट द एक्सपेंस ऑफ चार्जिंग प्रीमियम प्राइस फॉर द शेयर्स. अच्छा, दूसरा हमने कहा कि इसमें प्रोविजन इट डज नॉट कंटेन शेयर होल्डर्स राइट प्रोविजन विच इज डिस्क्राइब्ड एज पॉइजन पिल. What is poison pill? The term poison pill refers to a defense strategy used by a target firm to prevent or discourage a potential hostile takeover by an acquiring company. Potential target uses this tactic in order to make them look less attractive to the potential acquirer. Although they are not always the first and best way to defend a company, poison pills are generally very effective.
how this concept of poison pill works. Takeovers are fairly common in the business world where one company makes an offer to assume control over another. Larger companies tend to take over smaller ones if they want to get into a new market when there are operational benefits by combining both entities or when the acquirer wants to eliminate the competition. Takeovers, though, aren't always harmonious and become hostile when the target doesn't entertain or want to be taken over. When a company becomes the target of a hostile takeover, it may use the poison pill strategy to make itself less attractive to the potential acquirer. As the name indicates, a poison pill is analogous to something that's difficult to swallow or accept. A company targeted for an unwanted takeover may use a poison pill to make its shares unfavorable to the acquiring firm or individual. अच्छा जी, होता ये है कि जी अगर कंपनी को ये खतरा हो कि जी कोई और अदर कंपनी ट्राइंग टू टेक ओवर, तो फिर वो क्या करते हैं कि वो अपने शेयर्स की प्राइस को गिरा देते हैं इंटेंशनली, यानी अपने शेयर होल्डर्स को ऑप्शन दे देते हैं कि जी वो एडिशनल शेयर्स ले सकते हैं और वो सब्सटेंशियली लो प्राइस पे उनको शेयर्स दे देते हैं। तो उस शेयर की प्राइस की गिरने की वजह से ये होता है कि वो जो कंपनी टेक ओवर करना चाह रही है, इट दिस टेक ओवर बिकम्स लेस एट्रैक्टिव फॉर हिम। तो वो फिर यानी बेसिकली आपने अपने शेयर्स की प्राइस तो गिरा दी, अपना नुकसान किया, लेकिन that was done in order to prevent this takeover. So that is the concept of this poison pill. Poison pill also significantly raise the cost of acquisition and create big incentives to deter such attempts completely. ठीक है, तो ये that is the reason behind these poison pills. So stockholder friendly charter it does not contain shareholder right provision. So this type of provision should not be there in the charter of the company. Actually, third one is restricting voting rights. This provision automatically cancels the voting rights of any shareholders who owns more than a specified amount of the company's stock. The board can grant voting rights to such a shareholder, but this is unlikely if that shareholder plans to take over the company. ओके, सो दैट्स ऑल। ये जो लास्ट पॉइंट है इसको मैं एक दफ़ा थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि होता ये है कि इसके अंदर कंपनी ने रिस्ट्रिक्ट कर दिया वोटिंग राइट्स को कि अगर एक शेयर होल्डर, लेट्स से इफ ही गेट्स द if any shareholders get 25%, just an example, 25% of the total shares, तो he will not be entitled to vote. रीजन उसकी है कि जी कंपनी उसको मैनेजमेंट को टेक ओवर से बचाना चाहती है। तो this should not be part of a friendly shareholder friendly charter. This should not be part of it कि उसमें ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो ये तीन चीज़ें हमने डिस्कस की कि ये एक स्टॉक होल्डर फ्रेंडली चार्टर के अंदर जो है ना, ये तीन चीज़ें दे शुड नॉट बी पार्ट ऑफ इट। नंबर वन वॉज ग्रीन मेल। ठीक है, ये तीन चीज़ें जो हमने एंड में डिस्कस की कि स्टॉक होल्डर फ्रेंडली चार्टर हैज़ एट लीस्ट द फॉलोइंग थ्री characteristic. It should ban Greenmail. It does not contain provision for poison pill, and it does not. It should contain restricted voting. यानी रिस्ट्रिक्टिव वोटिंग राइट्स का प्रोविजन इसमें होना चाहिए ताकि टेक ओवर ना कर सकें मैनेजमेंट को, कोई शेयर होल्डर या ज़्यादा शेयर लेके वो कंपनी की मैनेजमेंट को टेक ओवर ना कर सके। तो ये तीन चीज़ें हमने इसमें डिस्कस की। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस topic that we covered today about corporate governance. So in this lecture what we covered today, first of all we saw certain actions of the managers which are not in the interest of the company. फिर हमने ये बात की कि किस तरह से जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है उनकी एक्शन को कंट्रोल किया जा सके, डिसिप्लिन किया जा सके, उसके लिए डिफरेंट मेजर्स देखे। और तीसरी चीज़ हमने देखी कि जी कंपनी का जो चार्टर है उसके अंदर क्या चीज़ें, क्या प्रोविजंस होने चाहिए और कौन सी चीज़ें हैं जो कि दैट should be there which better serve the interest of the shareholders. With this we come to the end of this topic as well as the end of the chapter and also the end of the course for the spring 2020. यहाँ पे हम this is the last lecture that
we covered today, and with this we have completed the course. So that's all for today. I hope things got clear. If still something is not clear, you can ask in the class or you can ask in the WhatsApp group. Thank you very much.